अभी हमारी बोर्डिंग हो रही है फेरी पे और हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो गई है वेल वॉचिंग डॉल्फिन वॉचिंग की बाल्बो आइलैंड से। ये बहुत ही समंदर तेज़ है, आज वेव्स चल रही हैं, आप देख सकते हैं सामने ये पूरी बोट हिलती हुई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नए ब्लॉग के साथ आज हम आपको लेके जा रहे हैं वेल वॉचिंग एंड डॉल्फिन वॉचिंग पे। सो हम लोग अभी हैं बाल्बो आइलैंड। यहाँ से अभी हम ये जो फेरी नज़र आ रही है इस पर जाएंगे। अभी हमारी बोर्डिंग हो रही है फेरी पे We made it. और हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो गई है वेल वॉचिंग डॉल्फिन वॉचिंग की बाल्बो आइलैंड से। सामने जो आपको फेरी नज़र आ रही है, आप अरवाइन से बाल्बो आइलैंड इस फेरी के थ्रू आ सकते हैं अपनी कार्ड लेके। तो हमने अपनी वीडियो में भी शो किया था लास्ट टाइम, तो आप डिटेल्स देखने के लिए आप हमारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। Especially canteens and backpacks, we do not want them falling down onto the main deck or into the water. Please, when you are upstairs, do not sit on the tabletops. Do not stand on the bench seats. The handrails, making sure your feet are on the deck at all times. Parents, really help me out here. Do not let your kids run, jump, or climb on anything. Make sure that their feet are on the deck at all times. Very important. There is a lot of wind speed out there. In just a few moments, we're going to be outside the harbor here. I want to remind everybody of the safety rules. Please, no running, no jumping, no climbing on anything. Parents, really help me out with that one.
बहुत ही समंदर तेज़ है आज, वेव्स चल रही हैं, आप देख सकते हैं सामने ये पूरी बोट हिलती हुई जा रही है। Unsafe for heading out here for whale watching, you guys. So I am going to turn the boat around. हैवी विंड की वजह से हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया है और अब वापस स्टेशन पर जा रहे हैं टर्म्स के फेरी के। तो हमें ये लोग कभी कॉम्प्लीमेंट्री पास देंगे वॉचर और हम उसको कभी भी रिडीम करा सकते हैं। तो आज हम व्हेल वॉचिंग तो नहीं कर सके। मौसम बहुत अच्छा था लेकिन विंड ज़्यादा था, तो पहले ही वार्न कर दिया था कि विंड ज़्यादा है तो आप सीट पे ही रहें ऑल द टाइम। लेकिन बस 15 मिनट के बाद इन्होंने देखा नहीं, नॉट अ राइट वेदर, तो मैंने वापस यू टर्न लेके टर्मिनल पे ले लिया है वापस। तो खैर लेकिन मज़ा आया, लाइक 30 मिनट की हमें फ्री की राइड मिल गई आज, तो इट वाज फन, अच्छा रहा। और अब हम फ्री टिकट मिल जाएगा तो हम नेक्स्ट वीक या 2-3 वीक्स के बाद कभी भी आ सकते हैं।